this video we will be solving the sums from the problem set which are related to exercise number 7.3 and 7.4। कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम सेट में हम लोग सेक्टर के सम सॉल्व करते हैं, सेगमेंट के सम सॉल्व करते हैं। सो टू बिगिन विथ फर्स्ट क्वेश्चन, वी ऑल नो इट इज MCQ, and in this MCQ first question the first sum is related to 7.3. The ratio of the circumference and the area of the circle is 2:7. Find the circumference. Circumference and area ratio is given 2/7 and we have to find the circumference. So let us apply circumference का formula. Circumference का formula क्या है? 2 pi r. एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/7। कैंसलेशन, पाई विल कैंसल और एक आर कैंसल हो जाएगा। 2/r इज इक्वल टू 2/7। क्रॉस मल्टीप्लाइंग r will become 7. r will become 7 units. Now we are supposed to find out the circumference. So let us use the circumference formula. 2 pi r 2 pi into 17 which will become 14 pi units. अच्छा, मैंने पाई का वैल्यू क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं किया? बिकॉज जो चारों ऑप्शन दिए हैं MCQ में, चारों में पाई एज इट इज उन लोग ने रखा है। सो हियर द आंसर इज A, 14 pi. Second one, if the measure of an arc of the circle is 160 degree, so theta is given 160 degree, length is 44, length of arc is given 44 centimeter. Find the circumference of the circle. Circumference इन लोग ने find करने को बोला है, तो let us use length of the arc formula. Theta upon 360 into 2 pi r. लेंथ ऑफ द आर्क की जगह पर आ जाएगा 44, थीटा की जगह पर आ जाएगा 160 अपॉन 360। 2 पाई आर, 2 पाई आर इज नथिंग बट circumference of the circle. We all know that 2 pi r is the circumference of the circle का formula. Now cross multiplying 44 into 360 upon 160 is equal to circumference. Cancelling this, 0 will cancel, 4 4s are 16, 4 11s are 4, 9s are 36. So circumference answer is 99 centimeter, and 99 centimeter is option D. Option D, 99 centimeter. Third sum, third MCQ I meant to say. Find the perimeter of the sector of the circle if the measure is 90 degree. Measure of the arc denoted by theta is 90 degree. Radius is 7 centimeter and we want to find out the perimeter of sector. Now we all know the perimeter of sector formula is 2r plus L, where L stands for length of the arc. That means पहले हमें find करना पड़ेगा length of the arc, तो मैं ये formula फिलहाल erase करता हूँ। First we will find out length of arc denoted by L. The formula is theta upon 360 into 2 pi r. In the place of theta will come 90 upon 360 into 2 pi का value 22/7, r का value 7. Now cancellation will give us 7 will cancel, 0 will cancel, 9 1s are 9 4s are, 2 1s are 2 2s are 4, 2 11s are 22. So answer of the length of the arc is 11 centimeter. Now we have to find out the perimeter of the sector. Perimeter of sector formula is 2r plus L. Perimeter of sector formula is
2r plus L, 2 into 7, r की जगह पर आ जाएगा 7 plus L, just now we found out 11, which will give you 14 plus 11, and that is 25 centimeter. And 25 centimeter is option B. Option B, 25 centimeter. Alright, now the other sums which are related to 7.3 and 7.4 is this sum number 8. Sum number 8, now we begin. The radius cut. Sum number 8 નથી. Sum number 8 નથી. તમે કરી શું રહ્યા છો? હા? આ બધા સમ આગળ પાછળથી કેમ લઈ રહ્યા? મેં તને કઈ સામે heading છે? Now sum number 9th is related to 7.3 and 7.4. Sum number 9th is the area of the sector of a circle of 6 centimeter radius. Radius is 6 centimeter. Area of sector is given 15 pi square centimeter. Find the measure of the arc. Measure of the arc, that means we have to find out theta and length of the arc. And also we have to find out length of the arc corresponding to the given sector. Alright, first of all, in order to find out theta find करने के लिए तो कोई formula नहीं है, तो what we will do is जो दिया है उसी का formula apply करो. Area of sector is given, तो let us apply area of sector formula. Area of sector is theta upon 360 into pi r square. In the place of area of sector आ जाएगा 15 pi. Theta we have to find out upon 360 into pi. Radius is 6 square. ये r है, 6 जैसा लग रहा था. R की जगह पर आ जाएगा 6 square, because r square, so 6 square will come. Cross multiplication 15 pi into 360 upon pi into 6 का square 36 is equal to theta. 360 will go up, pi and 36 will come down. Now cancelling this we will get 36, 1s are 36 and 0. Pi will cancel. So theta value is 150 degree. We have found out the measure of the arc, and that is 150 degree. The sum is not over. Now we have to find out length of the arc of the sector. So we will use area of the sector का formula again, but we are now going to use the other formula, half into L into R. Area of sector का दूसरा वाला formula half into L into R. Area of sector was already given 15 pi, half into L we have to find out. R is given 6. R is given 6. Now cross multiplication 15 pi into 2 upon 6 is equal to L. 2 ऊपर गया and 6 will come down. Now after cancellation, let us see this cancellation. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 5s are 15, 5 pi. So L we got answer as 5 pi centimeter. That means length of arc is 5 pi centimeter. And as you all know, every sum should end with the final answer. The first answer will be measure of arc is equal to 150 degree. Second, length of arc is equal to 5 pi centimeter. In sum number 10 we have P is the center of the circle, AB is the chord, PA is 8 centimeter, PM is the distance of center P from the chord AB, and that is 4 centimeter. We want to find the area of this shaded region. Now ये जो shaded region है, actually it is segment AXB. It is nothing but the segment of a circle. The name of the segment of the circle is segment AXB. What is the formula for finding the area of segment? The formula is
r square pi theta upon 360 minus sine theta upon 2. We require theta over here. Theta means the central angle. Angle APB is not given. So we cannot apply the formula. We cannot apply the formula right now. So first thing is सबसे पहले हमें find करना पड़ेगा major angle APB. How shall we find that? Let us see. Here we observe that PM is 4 centimeter and hypotenuse PA is 8 centimeter. PM is 4 centimeter, hypotenuse PA is 8 centimeter. Since PM is half of the hypotenuse, PM is half of the hypotenuse, therefore by converse of 30, 60, 90 theorem, PM का opposite angle PAM बन जाएगा 30 degree by converse of 30, 60, 90 theorem. Since PM is half of the hypotenuse, 4 is half of 8, PM is half of the hypotenuse PA. Therefore, by converse of 30, 60, 90 theorem, angle PAM will become 30. Angle PAM 30, angle PMA 90. So, the remaining angle APM will become 60. This remaining angle APM will become 60 degree. Similarly, we can find major angle BPM as also 60 degree. Similarly, we can find major angle BPM also as 60 degree. So, entire angle APB will become, entire angle APB, ये पूरा angle APB बन जाएगा 60 plus 60 120 डिग्री. ये पूरा एंगल हो जाएगा 120 degree. Now since this theta is 120 degree, so still we cannot apply the area of segment formula. We can still not apply the area of segment का formula, because in that formula we have to use sin theta. और sin 120 का वैल्यू हमें नहीं पता. We just know the values of sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 and sin 0. Sin 120 we do not know. That's why we cannot apply the area of segment का formula in this sum. तो what shall we do is, हम लोग पहले find करते हैं area of sector. पहले फाइंड करेंगे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर PAXB. सेक्टर PAXB का एरिया फाइंड करते हैं. फिर फाइंड करते हैं ट्राइंगल PAB का एरिया. ट्राइंगल PAB का एरिया फाइंड करते हैं एंड देन दोनों को सब्ट्रैक्ट. सेक्टर minus the triangle will give us the area of the shaded region. Once again, to find out the area of the shaded region, what we will do is, first we'll find out area of segment PAXB. Then we'll find out area of triangle PAB. दोनों को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा area of the shaded region. Before we find out area of sector PAXB, let us first find out AM. AM पहले find करते हैं AM. AM is opposite to 60 degree. AM is opposite to 60 degree. Therefore, by 30, 60, 90 theorem, AM is equal to root 3 upon 2 into PA. By 30, 60, 90 theorem, we will get AM is equal to root 3 upon 2 into PA. Side opposite to 60 degree is root 3 upon 2 times of the hypotenuse. So root 3 upon 2 into 8, which will give us 4 root 3 centimeter. AM is 4 root 3 centimeter. Likewise, BM will also become 4 root 3 centimeter.
Because AM and BM are equal, BM will also become 4 root 3 centimeter. Perpendicular, the reason is perpendicular from the center to the chord, bisect the chord. तो AM हमें मिला था 4 रूट 3 सेंटीमीटर, तो BM भी हो जाएगा 4 रूट 3 सेंटीमीटर. Now, as I told you before, to find out area of this shaded segment, we will first find out area of sector PAXB. Area of sector PAXB will be theta upon 360 into pi r square. Theta we have found out just now, 120 upon 360 into pi value we will take as 3.14. Radius is 8 square. 120 upon 360 into 3.14 into 8 into 8. Cancellation. 0 cancels. 12 ones are 12, 3s are 36. Now multiplying 3.14 into 8 into 8 and then divided by 3. Let us do the multiplication calculation over here. 3.14 into 8, 25.12 into 8, 200.96. 200.96 divided by 3. Now, what will be the answer of this division? Let us see that. 200.96 divided by 3. 3 6 are 18. Again 3 6 are 18. Point. 3 9s are 27. 3 8s are 24. 3 6 are 18. Alright, up to 3 decimal place, that is sufficient. So we got the answer as 66.986. Because the third decimal place is more than 5. Because the third decimal place is more than 5, so this area we will take as 66.99 square centimeter. Area of sector PAXB हमें मिल गया है 66.99 स्क्वायर सेंटीमीटर. कहीं पे इसको नोट डाउन करके रख लेते हैं. 66.99 PAXB, सेक्टर PAXB का आंसर हमें मिला था. Now we will find out area of triangle PAB. Area of triangle, area of any triangle formula is half into base into height. So area of triangle PAB, half into base into height. The base is AB, height is PM. AB is 4 root 3 plus 4 root 3, 8 root 3 centimeter. Height PM is 4 centimeter. Now cancellation will give us 2 2s are 4. 8 root 3 into 2 will give us 16 root 3. 16 into 1.73. Let us multiply and see what is the answer of 16 into 1.73. 16 3s are 48. 116. 27.68 square centimeter. Area of triangle PAB हमें मिला 27.68 square centimeter. So एरिया ऑफ सेक्टर PAXB हम लोग फाइंड कर चुके हैं 66.99, और अभी अभी मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB 27.68 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन है सेगमेंट AXB. सो एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन विल बी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. Area of this shaded portion will be area of sector minus area of triangle PAB. 66.99 minus 27.68.
If you subtract this, you will get 66.99 minus 27.68. 39.31 square centimeter. That will be the area of this shaded portion. Alright, now sum number 11. Square ABCD is inscribed in the sector APCQ. The radius of the sector CBXD is 20 centimeter. Complete the following activity to find the area of the shaded region. Alright, now in this sum, they have given us two sectors and one square. One is the outer sector APCQ. One is the inner sector CBXD. एक है आउटर सेक्टर APCQ, एक सेक्टर है अंदर जो है सेक्टर CBXD, and there is one square. There is one square ABCD. There is one square ABCD. Now, radius of the sector CBXD is given 20 centimeter. ये जो रेडियस है सेक्टर CBXD का, वो स्क्वायर का क्या बन जाएगा? साइड. स्क्वायर का बन गया है साइड. So I will write over here side of the square is equal to radius of sector CBXD, and that is how much? 20 centimeter. ये जो रेडियस है सेक्टर CBXD का, वो स्क्वायर के लिए क्या बन गया है? साइड. स्क्वायर के लिए बन गया है साइड. Let us find out the diagonal of the square. डायगोनल ऑफ द स्क्वायर की क्यों जरूरत पड़ेगी? आई विल टेल यू. डायगोनल ऑफ द स्क्वायर फॉर्मूला इज साइड रूट 2 that we have studied in the previous chapter, and that will become 20 root 2 centimeter. Diagonal of this square ABCD will become 20 root 2 centimeter. ये जो डायगोनल है स्क्वायर का, वो आउटर सेक्टर का रेडियस बन गया. ये जो डायगोनल है स्क्वायर का, वो आउटर सेक्टर का क्या बन गया है? रेडियस. सो नाउ वी हैव रेडियस ऑफ द इनर सेक्टर 20. वी हैव रेडियस ऑफ द आउटर सेक्टर 20 रूट 2, एंड साइड ऑफ द स्क्वायर तो अपने पास है ही. हाउ मच इज दैट? 20 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट वी विल डू इज, मैं तुम लोगों को दोनों मेथड बताता हूं. एक जो टेक्स्ट बुक में उन लोग ने एक्टिविटी फॉर्म में किया है वो, एंड देन आई विल गिव यू वन इजियर मेथड, शॉर्ट एंड सिंपल मेथड. फर्स्ट द टेक्स्ट बुक मेथड जो एक्टिविटी फॉर्म में उन लोगों ने सॉल्व किया है. व्हाट दे हैव डन इन द टेक्स्ट बुक इज, इस पूरे शेडेड रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. वन इज शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर, वन इज शेडेड रीजन आउटसाइड द स्क्वायर. शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर को मैंने ब्लू में कर दिया है, तो मैं इसको ब्लू जोन बुलाऊंगा. ये जो शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर है, मैं उसको ब्लू जोन बताता हूं. और ये जो शेडेड रीजन आउटसाइड द स्क्वायर है, मैं उसको रेड जोन करके बुलाऊंगा. नाउ हाउ शैल वी फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ब्लू जोन? मतलब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर, हियर I stands for inside the square. Shaded region inside the square will be found out like this. Area of square minus area of the inner sector, minus area of the inner sector.
द शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर, मतलब ये ब्लू जोन का एरिया हम लोग फाइंड करेंगे लाइक दिस, स्क्वायर का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया। स्क्वायर पहले क्यों आएगा? बिकॉज ये ब्लू जोन के लिए स्क्वायर इज बिग, सेक्टर इज स्मॉल, so area of square minus area of this inner sector. Area of square formula is side square. Area of the sector formula theta upon 360 into pi r square. Side is already given 20 square minus theta is 90, because in a square all angles are 90 degree, that's why theta will take as 90 degree. 90 upon 360 into pi into radius is 20. 20 square 400. Now let's solve this. 90 upon 360 into 3.14 into 20 into 20. Cancellation. 9 4s are 36. 0 0 cut हो गया. 4 5s are 20. So we will get over here 400 minus 20 into 500. 100 into 3.14 will give you 314. 400 minus 314 will give us 86 square centimeter. So far what we have done is we have found out area of the shaded region inside the square. और वो हमें कैसे मिला? Area of square माइनस एरिया ऑफ द इनर सेक्टर। फॉर्मूला अप्लाई किया, सॉल्व करके मिला 86। लेट अस जस्ट नोट डाउन ओवर हियर दैट ये जो ब्लू जोन है, जिसको मैंने ब्लू जोन करके बुलाया है, दरअसल ये क्या है? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर, जिसको मैं ब्लू जोन करके बुला रहा हूं। फाइन, ब्लू जोन का तो एरिया हमें मिल गया। अब फाइंड करते हैं रेड जोन का एरिया। रेड जोन का एरिया मैंने जो रेड जोन बताया है मैंने जो रेड जोन बताया है, दैट इज शेडेड रीजन आउटसाइड द स्क्वायर। सो दैट वी विल फाइंड आउट लाइक दिस। Area of the shaded region outside the square, AO. O stands for outside the square, जो मैं रेड जोन करके बुला रहा हूं। To find out area of the shaded region outside the square, what we will do is area of this outer sector minus area of the square, इस बार सेक्टर बड़ा है। रेड जोन के लिए सेक्टर इज बिगर, आउटर सेक्टर इज बिगर, तो आउटर सेक्टर एरिया पहले और स्क्वायर बाद में। फॉर द रेड जोन सेक्टर APCQ इज बिगर देन द स्क्वायर, इसीलिए स्क्वायर का एरिया पीछे और सेक्टर का एरिया आगे, क्योंकि सेक्टर इज बिगर। रेड जोन के लिए सेक्टर इज बिगर। Alright, let us apply the formula theta upon 360 into pi r square, and area of square is side square. Theta is 90 upon 360 into pi 3.14 radius. Outer sector का radius ये है, diagonal AC। हम लोग ने diagonal of the square पहले ही find कर दिया था, because this diagonal is the radius of the outer sector. This diagonal is the radius of the outer sector, and that is 20 root 2 square. Side of the square तो था ही 20। 90 upon 360 into 3.14 into 20 root 2 square will become 800। 20 का स्क्वायर 400, रूट 2 का स्क्वायर 2, 400 into 2 will give us 800। 20 square 400। Now let us do the cancellation over here। 0 cancel, 9 1s are, 9 4s are, 4 1s are, 4 200।
if you multiply 3.14 into 200 will give us 628 minus 400 and that will become 228 square centimeter. तो रेड जोन का एरिया हमें मिला 228 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमारे लिए जो रेड जोन है वो है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आउटसाइड द स्क्वायर, स्क्वायर के बाहर का शेडेड रीजन. हम लोग ने फाइंड कर दिया शेडेड रीजन इनसाइड द स्क्वायर 86. हम लोग ने फाइंड कर दिया शेडेड रीजन आउटसाइड द स्क्वायर 228. सो the entire shaded region will be area of the entire shaded region will be ये जो ब्लू जोन का एरिया आया था 86 और ये जो रेड जोन का एरिया आया था 228, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 314 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो बाय दिस मेथड व्हाट डिड वी डू, हम लोग ने पहले ये शेडेड रीजन फाइंड किया एरिया इनसाइड द स्क्वायर ब्लू जोन. वो कैसे मिला था, स्क्वायर का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया. फिर बाद में हम लोग ने रेड जोन का एरिया फाइंड किया. रेड जोन मतलब द शेडेड रीजन आउटसाइड द स्क्वायर. वो कैसे मिला था, सेक्टर माइनस स्क्वायर. फिर लास्ट में ब्लू जोन का एरिया और रेड जोन का एरिया हम लोग ने प्लस कर दिया. दैट विल गिव अस द एरिया ऑफ दिस एंटायर शेडेड रीजन. दिस वाज द एक्टिविटी मेथड व्हिच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. अब मैं बता रहा हूं एक ज्यादा इजी वाला मेथड और वो मेथड ये है. अकॉर्डिंग टू दैट सिंपल मेथड, what we will do is just find out area of the outer sector APCQ. Find out area of the outer sector APCQ. Find out area of the inner sector CBXT. आउटर सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, इनर सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे और फिर दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ द एंटायर शेडेड रीजन. तो अलग अलग ऐसे ब्लू जोन रेड जोन का एरिया फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वी विल सिंपली फाइंड आउट एरिया ऑफ द आउटर सेक्टर बाय यूजिंग द फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 90 अपॉन 360 इंटू 3.14. रेडियस, आउटर सेक्टर का रेडियस था 20√2 स्क्वायर. अच्छा, अभी प्रीवियस मेथड में ही हम लोग ने ये आउटर सेक्टर का एरिया फाइंड किया था, 628 मिलेगा. नाउ लेट अस फाइंड आउट एरिया ऑफ द इनर सेक्टर CBXT. थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 90 upon 360 into 3.14. Inner sector area was 20 centimeter and we had calculated, we had got area of the inner sector as 314 square centimeter. So the area of shaded region will be outer sector area मतलब APCQ minus inner sector area CBXT. That will give us 314 square centimeter. कोई भी मेथड करो आंसर तो सेम ही आएगा, 314 square centimeter. Alright, sum number 12. Two circles with centers O and P are touching internally at point A. PQ is 9, DE is 5. Complete the following activity to find the radii of the circles. सम नंबर 12 में अपने पास दो सर्कल है, वन सर्कल विद सेंटर O, वन सर्कल विद सेंटर P. They are touching internally at point A. PQ is given 9 and DE is given 5. We have to find out the radii of both the circle. अभी टेक्स्ट बुक में फिगर में उन लोग ने एक चीज मिसिंग रखी है, परपेंडिकुलर. ये दोनों डायमीटर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए. फाइन.
Let us consider outer circle radius as capital R. तो OB बन जाएगा R, OD बन जाएगा R, OA will be R and OC will also become R. We are considering the radius of the outer circle as R. OB, OA, OC, OD, they all will be denoted as capital R. R for radius of the circle, radius of the outer circle. इनर सर्कल का रेडियस हम लोग अज्यूम करेंगे स्मॉल आर. ओके, नाउ OB is R, BQ is 9. So OQ will become R minus 9. OQ will become R minus 9. OB R है, BQ 9 है, तो OQ बन जाएगा R minus 9. And how much will OE become? How much will OE become? OD पूरा R है, DE is 5. OE will become R minus 5. OE will become R minus 5. Now, we have studied this in the previous standard. Perpendicular from the center to the chord bisect the chord. OE is R minus 5, so OF will also become R minus 5. OE and OF are equal. The reason is perpendicular from the center to the chord bisect the chord. OE R minus 5, OF is also R minus 5. Now, let me remind you one property which you have studied in circle chapter. तो सर्कल चैप्टर में हम लोगों ने ये सीखा है प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स. Property of internal division of chords. If two chords are intersecting internally, then by this property we have AM into BM is equal to CM into DM is equal to CM into DM. AM into BM is equal to CM into DM by the property of internal division of chords. Same property we are going to apply over here in the smaller circle, in the circle with center P. In the circle with center P, AQ and EF are intersecting internally. AQ and EF are intersecting internally. Therefore, by the property of internal division of chords, we have OA into OQ is equal to OE into OF. OA is R, OQ is R minus 9, OE is R minus 5, OF is also R minus 5. Multiplication R square minus 9R is equal to R minus 5 the whole square. R square minus 9R is equal to, here we will apply the formula of A minus B the whole square. R square minus 10R plus 25. R square will cancel. Minus 9R minus 10R इधर आएगा तो हो जाएगा plus 10R is equal to 25. Minus 9R plus 10R will give you R is equal to 25. So the radius of the outer circle we have found out as 25. To find out the radius of the inner circle, let us find out the diameter AQ. To find out the radius of the inner circle, let us find out the diameter AQ. Diameter AQ is equal to AO plus OQ
AO is R and OQ is R minus 9, 2R minus 9. R value we found out just now, 25 minus 9, 51 minus 9, 50 minus 9, and that will give us 41. That will give us 41 units. Diameter AQ, inner circle का diameter AQ हमें मिला 41. Now diameter is nothing but twice of radius. 2R is equal to 41, where R is the radius of the inner circle. So R is equal to 41 upon 2, and that will give us 20.5 units. So the radius of inner circle is also found out as 20.5 units.